I don't have anything. I don't have to introduce Gyana. Your bio is with all of us, a remarkable bio. So please go ahead and um, give us your, share your thoughts and your expertise with us. Okay. Sir, especially good morning to you. जो माने इठी इंडिया रे अछंती समस्त को गुड इवनिंग आउ मते अपॉर्चुनिटी मिली थिबारु आई वुड लाइक कि मु ओडिया रे और इंग्लिश रे मिसामिसी करिके कहिबी सो कि बहुत भल लागियो आई वांट टू शेयर कारण बहुत गुडे प्रेजेंटेशन आमे दउचे जोड़ा कि मातृभाषा रे केबे देनी तो मातृभाषा रे दवा पे भारी इच्छा ए प्रेजेंटेशन टिको आउ मिक्स करिकी मु रखिबी मोर ये प्रेजेंटेशन टिको आई विल मु शेयर करछि स्क्रीन सर सर मो स्क्रीन देखि पारुछंती Yes. या सर मोर टॉपिक रही इनोवेटिंग सीजीपीएस कुकर आउ लैम एयर ड्रायर सीजीपीएस कहले कंप्लीट जिलेटिनाइजेशन बाय पेरिफेरल स्ट्रीमिंग ता विषय मु टिके डिटेल कहबी जदो स्लाइड को जीबी बिफोर आई गो टू दैट नो मु जो माने परे रिकॉर्डिंग देखिबे जो माने मो विषय जानि नांती मु एक्चुअली 2007 रो बैच पास आउट और 2009 रू मु आईआईटी खड़गपुर रू पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी रू पास आउट मु बेसिकली मोर प्रोफाइल इज लाइक दिस कि मु आईआईटी खड़गपुर रे कैंपस रिक्रूटमेंट रे गोटे कंपनी जो कि इंडो डेनिश कंपनी जो डेनिश और इंडियन कोलैबोरेशन रे जॉन फॉलर और वेस्ट्रुप रो कोलैबोरेशन गोटे कंपनी जोटा तयारी हेतिला से कंपनी में जॉइन कली आज ए ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और सिटी ड्यू कोर्स रे माने मोर आर&डी रे काफी माने इंटरेस्ट थिला आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट so due to that no I in the end last 4-5 years मोर सिटी माने जेतोले maybe around 2017 afterwards मु सिटी as a R&D coordinator I become their R&D coordinator ଆଉ ସେଠି ମତେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ମୁଁ ସେ कंपनी को कंसीडर करे जो 12 वर्ष मु सेठी रहिली इट वाज ए लर्निंग पीरियड फॉर मी जोटी कि माने अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज आमे क्लीनिंग ग्रेडिंग मिलिंग स्टोरेज पोस्ट हार्वेस्टर जेते गुडे सब माने एडवांस टेक्नोलॉजी रहिला ता विषय आमे मु तादरे बहुत गुडे काम कले एंड मींस लास्ट 5 years मोर थिबा भितरे सिठू मु मोर अचीवमेंट्स रहला कि मिलेट हस्किंग एंड पॉलिशिंग लाइन माने फॉलोअर वेस्ट्रुप इज नोन फॉर दैट बिकॉज ऑफ दैट से कंट्रीब्यूशन मु सिटी करके आस्तिला अब सीरीज ऑफ डिस्टोनर्स वर्टिकल पॉलिशर्स गुराक मु सिटी इनोवेट करथिली दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक नाउ currently मु एबे 2.5 years हला गोटे कंपनी एस्केप बॉयलर्स एंड ड्रायर्स हु आर नोन फॉर पैडी प्रोसेसिंग इन द वर्ल्ड से कंपनी चीफ टेक्निकल ऑफिसर हिसाब रे काम करूची तो जो मोर टॉपिक रही जोटा कि इनोवेटिंग सीजीपीएस कुकर एंड लैम एंड ड्रायर मुझे तो व्हेन आई एंटर्ड टू दिस कंपनी से ता भितरे केते प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थिला तो प्रथमे जाई कि मु सिटी स्वॉट एनालिसिस करथली कि कोन हमर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज गुरा अछि ताकू आमे देखा जाऊ तो से बेसिस रे बहुत गुडे जिंस लॉट ऑफ थिंग्स केम अप जो कि आमको गोटे एडवांस टेक्नोलॉजी टू हैव ए प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी विषय रे हमें काम करिया पे माने बहुत गुडे इनपुट्स मिलथि से टेक्नोलॉजी भितरे गोटे होचे सीजीपीएस कुकर और लैम एयर ड्रायर जोटा प्रोडक्ट इनोवेशन थिला और प्रोसेस इनोवेशन थिला कि स्मार्टनेस आनिवा तो ब्रिंग स्मार्टनेस टू द सिस्टम smartest in the sense PLC automation aniba. Now people are talking on artificial intelligence. Say intelligence, not to that level of intelligence, but to somewhat जो PLC level of intelligence ताको भी नहीं किया आसी परिबा. तो से दिन सो विषय ये तीनटा दिन सो विषय मुझे more presentation to रहूं. Before we go into deep into the topic,
प्रथम तो जानिबा दरकार अछि कोन टाइप ऑफ राइस प्रोसेस रहिछि बेसिक फंडामेंटल दसु समय को भाବରେ ମୁଁ टच करूछि रॉ ऑनेस्ट प्रोसेस जेमती कि आमे धान माने अमल कले ताकू हार्वेस्ट कर सला पर ताकू आमे क्लीन कले ताकू किछ समय ड्राई कले ताकू फटाफट मिलिंग कर देले सेटा रॉ ऑनेस्ट प्रोसेस है जाय धान को आमे जदी अमल करके क्लीन करके स्टोर कर देले किछ समय जेमती हमर ओडिसा रे बहुत पुराना लोक माने खणी पकोथले पाळ गदार रखुथले तो ए सब जिंस किबा माने मरेई रे रखुथले दैट इज द टिपिकल थिंग पीपल यूज्ड टू डू तो से माने कोन को स्टोर करथले दे यूज्ड टू स्टोर इट फॉर ऐसे 6 मास स्टोर करिवे तापरे मिल करके बा गोटे वर्ष स्टोर करिवे तापरे मिल करके ताको खाइबे स्टोरेज रे बहुत गुडे प्रोब्लेम्स होतला तापरे तार मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम्स आसिला लोकाने स्टोर भी कले बैक स्टोरेज अछि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स स्टोर करी सारी की ताको फेरे ताको नेचुरली एजिंग ताको करा जाए एज्ड ताको कहा जाए सेटा को ताको हमें ट्राई करी फेर मेल कले बेसिकली माने एरोमेटिक राइस जेमती बासमती हैला लोक माने एज करी की खांती ताको 40 माने हार्वेस्ट करी के ऑनेस्ट करी खांती एज करी खांती दैट इज अ एज्ड प्रोसेस तापरे आ गोटे प्रोसेस हैला जोठी कि लोक माने एते समय नाही स्टोर करिवार दे वांट टू एक्सेलरेट द एजिंग तो केमिति माने ये जो 2 वर्ष 6 मास रो जो स्टोरेज टाइम पीरियड रोचे ताको केमिति एक्सेलरेट करा जिवो ताको गोटे प्रोसेस सिंपली से माने स्टीम दे देले ताको क्यूरिंग कर देले स्टीम देकी ताको से माने डिसाइड कले कि ना ताको फेरे क्लीन कले स्क्रीन करके स्टीम देले स्टीम देके ड्राई कले ताको मिल गले ताको एक्सेलरेटेड एजिंग प्रोसेस को आ गोटे टाइप रो प्रोसेस जोटा सिंगल बॉइल्ड प्रोसेस हार्वेस्ट क्लीन पार्शियली सोक करिवे से माने ठंडा पानी से सोक करिवे स्टीम देवे ड्राई करिवे मिल करिवे सेटा हेला एटा शॉर्ट ड्यूरेशन स्टोरेज रुए 3 से 4 घंटा पर्यंत स्टोर करिवे सोक करिवे तापरे से कोन करके ता जो पेरिफेरल पोर्शन रहिला न पैडी रो सेटा पार्बोलिंग हुए भीतर रॉनेस रहे सेटा को सिंगल बॉइल्ड बेसिकली तमिलनाडु मोस्टली तमिलनाडु किछ परसेंट गुजरात रो किछ लोक माने सिंगल बॉइल्ड खान तो सेटा होची सिंगल बॉइल्ड प्रोसेस डबल बॉइल्ड प्रोसेस होची गोटे जोठी कि प्री स्टीम करा जाए तार माने हॉट वाटर रे सोकिंग करा जाए तापर स्टीमिंग करा जाए दुई दुई थर ताको कोन करा जाए प्रथम स्टीमिंग माने प्री स्टीम करिक पैडी को सोक करंती तापर स्टीम करंती तो द डबल प्रोसेस इज मोर पॉपुलर तार तार बहुत गुडे रेंजेस रही तो एटा रहि गेला डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैडी हम प्रोसेस करि थाउ माने बेसिकली इन पैडी प्रोसेसिंग एतिक दिन से थाए अब पैडी प्रोसेसिंग रे तीनटा दिन से हुए गोटे हाइड्रेशन हुए जिलेटिनाइजेशन हुए आ गोटे डिहाइड्रेशन हुए हाइड्रेशन में कौन कि लोक माने साको सोकिंग कहती स्टिपिंग कहती कच्ची प्रोसेस कहती तापरे जिलेटिनेशन पक्की प्रोसेस कहती लोक डिहाइड्रेशन माने ड्राइंग तो तीनटा दिन माने बेसिकली पैडी प्रोसेसिंग कहले तीनटा दिन आम जो स्वॉट एनालिसिस आ गोटे टिपिकल प्लांट देखिया गले तार कौन कौन थाए जेमती कि प्री क्लीनिंग सेक्शन थाए गोटे रॉ पैडी ड्रायर थाए सुखिया पे मतलब जदी मॉइस्चर थाए इनिशियल पैडी रे तापरे हाइड्रेशन ए जो स्टेशन टी अछि से हाइड्रेशन एंड जिलेटिनेशन हो जाए सेठी सिंगल टैंक प्रोसेस रे तापरे जाके ड्राइंग हुए ए टिपिकल गोटे माने नॉर्मल ओल्ड स्टैंडर्ड पैडी माने प्रोसेसिंग यूनिट पार्बोलिंग यूनिट एतिक दिन से थाए आउ सर्कुलेशन हॉट वाटर सर्कुलेशन पे इठू गरम पानी दिया जाए सोकिंग टैंक्स को टिपिकली गोटे राइस मिलर जोटा कि नॉर्मली सब समस्या मतलब सब कंपटीशन इवन एस्केप मध्य देउची कोन टिपिकल आउ कोन सब केमती केमती सिस्टम थाए मु एतिक दिन से कहूची कारण माने इट इज क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड व्हाई द इनोवेशन सो गोटे सिंगल हैंडी टैंकी रे लोक माने करंती गोटे स्ट्रेनर थाए जो थे कि हाइड्रेशन और जिलेटिनेशन गोटे ही टैंक रे कर दिया जाए एठी रे ए जो टैंक रे होची प्री स्टीमिंग करा जाए तापरे सोकिंग करा जाए फिर छोटो टैंकी रे कुकिंग करा जाए एटा 3 स्टेज सिस्टम बेसिकली नॉर्थ इंडिया रे बासमती लोक माने प्रोसेसिंग कले करंती तारे पक्की सिस्टम जेमती कि छोटो छोटो टैंक सबू टैंक तले दिया होतला ताकू अवॉइड करिकि गोटे सिंगल यूनिट रे कर दिया जाएगा तो ये सब इवोल्यूशंस हला टैंक सिस्टम रे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम रो किंतु कौन से भी सिस्टम कंटिन्यूअस नथला बड़ा प्लांट को करिया पे कंटिन्यूअस दरकार
आपन को जदी माने हाई कैपेसिटी गोटे टन पर डे से 500 टन पर डे मते तयारी करबा पले बहुत गुडे टैंक लागुतला। तो से जिनस को हमको अवॉइड करबा पहिले गोटे कंटीन्यूअस सिस्टम रो नीड थिला। तो कौन कौन माने बेसिकली माने गोटे टिपिकल प्रॉब्लम जो एसोसिएटेड थिला हाइड्रेशन डिजेनरेशन डिहाइड्रेशन रो। हाइड्रेशन एक प्रॉब्लम कौन होतला कि नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर सोकिंग होतला। टेम्परेचर गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर। कलर डेवलपमेंट लोक मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्रीम कलर दरकार हमको, हमको येलोइश कलर दरकार, हमको पूरा व्हाइटिश कलर दरकार। तो ये जो कलर डिफाइन करथला कि पानी रो केते टेम्परेचर अछि, हाइड्रेशन रो टेम्परेचर। तापरे एटा तो गोटे टेम्परेचर थला कि ताकू स्टैंडर्डाइज करी हे नथला। गोटे होते लो हाइड्रेशन रेट थला, बहुत जल्दी सोकिंग हो नथला। मतलब जदि आमे ताकू हाई माने बहुत लंबा हाइड्रेशन रहउतला तादरे कोन होतला कि माने स्टिपिंग स्मेल आसुतला। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम जोटा कि माने होतला हाइड्रेशन रे। आउ हाई यूसेज ऑफ वाटर, बहुत पानी यूज होतला। थरे माने लोकने जे माने क्वालिटी करिया को चाहंती धान चळर, से माने कोन करथले पूरा प्योर वाटर नेबे, थरे सोकिंग करसला पानी को बाहर कर देबे। तो इट इज ए वेस्टेज ऑफ वाटर। ताकू से दिन रिसर्कुलेशन हे पर नथला बिकॉज़ ड्यू टू स्टिपिंग, टिपिकल स्टिपिंग स्मेल होतला। तो केतोडे हाइड्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम थला। सेमती जेलाटिनाइजेशन भी प्रॉब्लम थला। अनयूनिफॉर्म कुकिंग होतला जो स्ट्रेनर जाउतला मु पर स्लाइड्स रे देखेबी। इस स्ट्रेनर मझरे जदी जाए सिंगल स्ट्रेनर, स्ट्रेनर माने जोथरे स्टीम पाइप जीवो जोथरे के कोणा हेथिबो जोथरे स्टीम बाहरिबो। से स्ट्रेनर सराको प्रॉब्लम कोन होतला कि जोटा तार प्रॉक्सिमिटी रे अछि व्हिच इज नियर टू दैट, से भलो कुकिंग होतला। जेतरे तार प्रॉक्सिमिटी रु बाहर को पड़ी जाउतला, टिके अधिक होतला, ताकू न अंडर कुकिंग होतला। ताकू कुकिंग करिया को जाय कि जदी हम चिंता करिवा जोटा पाखरे अछि ओवर कुक हे जाउतला। तो देयर इज अ प्रॉब्लम ड्यू टू दैट। सो लोक माने कहउतले कि छोटो हांडी रे हम कुक करिबो। छोटो हांडी मींस स्मॉल टैंक, 2 टन टैंक रे हम कुक करिबो। गोटे बड़ हांडी। सो द नाउ साइजिंग ऑफ द प्लांट बढ़ी पानथले बिकॉज़ ऑफ दिस प्रैक्टिकल रीजंस फाइन। तो एटा गोटे थिला। आउ जेतेबेले हम स्टीमिंग करूचे जेतेबेले एक्सेस स्टीम बाहरिबो तार कंडेंसेटर प्रॉब्लम होतला। माने कंडेंसेट वेपर कंडेंसेट थिला, लिक्विड कंडेंसेट। अगेन दैट वाज कॉजिंग प्रॉब्लम इन कलर डिस्कलरेशन। तो कलर वाज अ टिपिकल मार्केट वैल्यू। माने गोटे पैडी रे कलर इज वेरी मच इंपोर्टेंट। डिस्कलरेशन हवा माने माने इट इज अ लॉस टू द मिलर। तो से केते गुडी प्रॉब्लम्स को नै कि जिलेटिनेशन लोक माने करूतले। तापरे डिहाइड्रेशन रे भी अनयूनिफॉर्म ड्राइंग होतला। हायर ड्राइंग टाइम लागुतला। से सिस्टम सुरे को नथला। आ सबु जाक जतेक सिस्टम थिला आर मैनुअल बेस्ड, ऑपरेटर बेस्ड। ऑपरेटर मूड खराब अछि तो से खराब दिन से करूतला। ऑपरेटर भलो अछि, ऑपरेटर ठीक अछि तो से भलो मिल रे करूतला। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटर। कंप्लीट मैनुअल काइंड ऑफ अ सिस्टम थिला। तो ए सब प्रॉब्लम्स ने किछि किछि इनोवेशन हेतला व्हेन नो। तो से इनोवेशन को नेकी माने से जिनस प्रॉब्लम्स को नेकी केतोडी इनोवेशन आई हैव स्टार्टेड इन दिस कंपनी। गोटे तो होची सीजीपीएस इनोवेशन। सीजीपीएस इनोवेशन जोटा कि जिलेटिनेशन नो बहुत गुडे प्रॉब्लम को एड्रेस कला। आ लैम एयर इनोवेशन है। लैम एयर ड्रायर इज अ ब्रांड नेम जोदरे हम लैमिनर एयर क्रिएट करथिलु। तार ताको मु डिस्क्राइब करबी। ए दीटा जिंस विषय रे मु एबे डिस्क्राइब करबी। आउ हाइड्रेशन रिलेटेड रे केते गुडे छोट छोट काम आमे करिथिले। अभी बहुत गुडे कंपटीशन लोग बनी करछन्ती। हॉट वाटर ऑटोमेशन हला, वाटर रिसर्कुलेशन ऑटोमेशन हला। तापरे एबे आमे करेंटली दीटा दिन से ऊपर आमे काम करछन्ती वैक्यूम सोकिंग मेथड। गोटे नुवा दिन से आमे माने इट इज देयर इन पेपर बट नाउ इंडस्ट्रियली ताको केमती करा जिवो तापरे आमे काम करछु। डिस्चार्ज ऑटोमेशन जोटा हो नथला सेटा गोटे टिपिकल प्रॉब्लम थिला। तापरे आमे एड्रेस करछु। एबे जो दीटा टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा ऑलरेडी आमे करि सारलोनी। दिस इज व्हाट सीजीपीएस इनोवेशन एंड लैम एयर ड्राइव। सीजीपीएस इनोवेशन जेमती कि मु आपन को कहउतले एबे गोटे सी माने आमे सीएफडी टूल्स अछि जोटी कि आमे देखुछु कि आमे इन्वेस्टमेंट कलु सीएफडी टूल देखि स्ट्रेनर रो कोन प्रॉब्लम अछि। डिस्पैरिटी इन कुकिंग जो मु कहउतले पाखरे जो दिन सरा को बेसी कुक होछि तापरे अनयूनिफॉर्म कुकिंग होछि जोटा काम धरा पड़ितला। लेफ्ट हैंड साइड जो जिनसटी को देखुछन्ती सेटा होछि सीजीपीएस सिस्टम। कोन ऑब्जेक्टिव नै कि आमे करथिली गोटे टू ब्रिंग ए न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑन ऑनलाइन कुकिंग। कंटिन्यूअसली कुकिंग हो माने से बैच सिस्टम रहबेन। अचीव यूनिफॉर्म कुकिंग, रिमूव एक्सेस कंडेंसेट वाटर वेपर जोटा कि थिला हमर प्रॉब्लम। हायर कंट्रोल ऑन द कलर डेवलपमेंट ऑफ द पैडी, कंप्लीट ऑटोमेटिक एंड रेसिपी बेस्ड ऑपरेशन, reduce steam consumptions,
comparatively drier and paddy during the output. तो तारो just गोटे 3D आपन को मु देखेबी कोन जिनसटी. This is what the system is developed. Uh, it is an array of polygonal system. प्रथमे ऊपरे जो सिस्टम टी रहला सेटा को पेरिफेरल सीजीपीएस सिस्टम स्टीमिंग जोटा के सेंट्रली होतला सेटा हमें साइड रे नेले तापर एटा होची कंडेंसेट रिमूवल इट इज अ अल्टरनेट अरे ऑफ नो कुकिंग आउ से कोन करला पैडी 4 मिनिट टाइम पूरा स्पेंड करिवो ता भीतर पूरा ऑनलाइन सिस्टम रा आसीबो देन गोटे एयर लॉक रहिबो ता भीतर हमें आरटीडी सेंसस रहिबो कि जिलाटिनेशन टेम्परेचर रे अचीव करिवो से एयरलॉक टी बाहरी वंस एयरलॉक हैला तापरे इठी से माने ठंडा है कि बाहरी तार जेते सब कंडेंसेट बाहरी की कंडेंसेशन सिस्टम करा सब अछि सेरा सब ये है कि से गोटे ड्रायर कंपैरेटिवली ड्रायर पैडी बाहरी दिस इज व्हाट द सिस्टम इज अब पेरिफेरल सिस्टम केमती कि आमे जदी देखिबा कोन तार सिस्टम अछि कि दिस इज हाउ द अरे इज तो आमे ऊपर को देखिबा जिंसटी तो paddy once it is going no it gets divided माने it is continuously getting divided and तळे से it is not coming in contact with the strainer so divide होची आउ I'll go back to the presentation system कोन होची तारे जतबे डिवाइड होची सेमती नाउ क्रिस क्रॉस है की अछि तो नाउ एक तो डिवाइड हला डिवाइड हेसला परे से यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ईच एंड एवरी पैडी नाउ सिंगल पैडी भी अलगा टाइप रो कुकिंग होबनी नाउ नाउ इट गिव्स अ यूनिफॉर्मिटी टू द तो एटा गोटे दिन से हमर ये हला तापरे कंडेंसेट जो जंती के एटा देखंते ए टाइप रो से बाइफरकेट करछि आ नॉन कंट्रैक्टिंग मेथड रे से कुकिंग करछि तापरे जहां भी लिक्विड कंडेंसेट बा वेपर कंडेंसेट रहुतला तादरे सिस्टम देन वी स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग इट तो आमे प्रथमे से जिनस को वैलिडेट करिथिलु एमपी रे मध्य प्रदेश रे दिस इज व्हाट द लेफ्ट हैंड साइड इज अ फोटो देखछंती दिस इज व्हाट द फोटोग्राफ जोठी कि ए सिस्टम टी लागिथिला आउ सी हमको सबुठु कचड़ा पेड़ी हमको देथिला बिकॉज़ व्हेन न्यू सिस्टम यू टू कांट नाउ इट इज तीनटा लाइन अछि एंड इट इज अराउंड 36 टन पर आवर सिस्टम यू कांट वेस्ट पेड़ी so जते कचड़ा पेड़ी थिला से हमको दोथला एंड यूज्ड टू रन नो फॉर अफ्रीकन एक्सपोर्टिंग टू अफ्रीकन नेशन सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस एठी कोन हला कि माने आपण देखुचंती जे ओल्ड सिस्टम थिला बहुत गुडे माने डिस्कलरेशन होतला सेम सीजीपीएस सेम पैडी सेम कंडीशन ना द कलर डेवलपमेंट इन दैट so kachada paddy ro kemti it started giving the result white is proper cooking the ethre selection color shutter upre load bhi kami gal this is what the beauty of CGPS system so contactless paddy cooking इनहाबिशन ऑफ माइलर ब्राउनिंग जो ब्राउनिंग होतला हीट रे सेटा को इनहाबिट कला यूनिफॉर्मिंग कुकिंग हैला यूनिफॉर्मिटी इन कुकिंग कंडेंसेट रिमूवल सिस्टम हैला रिजल्टिंग वाइटर राइस कैट वैल्यू हैला एंड लेसर कुकिंग टाइम बिकॉज़ नाउ व्हेन यू कुक द पैडी इन अ प्रेशराइज्ड सिस्टम तो पार्बोलिंग राइस रे कुकिंग टाइम देले आपण ताको कुक करंती तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम now what is coming out of these systems comparatively lesser cooking time I may observe kolu lab test so this is what the beauty of this technology how is no now this is not only a mechanical innovation jo thik hai ame intelligence tak through anithilo what intelligence we have got jemti ki ame automation system re ame
सबू चैम्बर रे आरटीडी सेंसर रहा इट विल गिव अ फीडबैक केते टेम्परेचर पैडी जाउची ईच एंड एवरी चैम्बर जो पास करी पैडी टेम्परेचर को मॉनिटर करा जाउतला आउ अकॉर्डिंगली अल्टीमेटली जेतेबेले जिलाटिनेशन एंड रे सेटा अचीव करि सरला परे ताकू से एयरलॉक भाल्व ताकू अलाउ करथला नेक्स्ट ड्राइंग सिस्टम को जीवा पे सो इट इज कंप्लीटली रेसिपी बेस्ड ऑपरेशन जोठी कि स्ट्रीमलाइन को आउ पैडी इनपुट और आउटपुट को कोऑर्डिनेट होथला इंटेलिजेंट बेस्ड सिस्टम दिस इज व्हाट सीजीपीएस सिस्टम इज अबाउट जेठी कि इट इज एन एग्जांपल जोठी कि एपी रे हमें रिसेंटली सप्लाई कर चुकी द होल सिस्टम इफ यू व्हाट यू सी over here is CGPS is involved in the final cooking. तापरे next innovation हो चुकी LAM air dryer, laminar air dryer. Drying is a huge science. ताकू बेसिकली गोटे ड्रायर जोटा कि ये पर्टिकुलर इनोवेशन कौन है DIDW ब्लोअर यूज होची माने बेसिकली समस्ते टिपिकली समस्ते करूछंती DIDW ब्लोअर DIW ब्लोअर दीपटे तार इनलेट थिबो सेंट्रिफ्यूगल ब्लोअर गोटे these are these are not that much high static pressure blowers जनरली ए कंपनी रो के बाद अन्य कंपनी समस्त कॉपी करते सिस्टम को सो ए ब्लोअर दरकार एति दरकार केते कैलकुलेशन केते दरकार एक्चुअली ब्लोअर केते सीएमएस दरकार ब्लोअर केते सेटा तो बेसिकली लोक माने बाहर कर दोथले ये करे बट स्टैटिक प्रेशर केते दरकार होतला ब्लोअर दीटा दिन से काम करे गोटे अछि तार सीएमएच केते आ केते स्टैटिक प्रेशर से दे पारुछि सिस्टम को ओवरकम करि पारुछि सेटा होछि ब्लोअर तो लोक माने डीआईडब्ल्यू ब्लोअर यूज करथले तो तार प्रोब्लेम कोन थला तार डिस्चार्ज रको तो हाई स्पीड जतबे हीट एक्सचेंजर को जाए तार स्पीड ऑफ एयर नो वॉल्यूम ऑफ एयर इज मोर बॉटम रे हीट एक्सचेंजर एते जाउ नथला तो ए कॉन्सेप्ट को आमे कोन कलु वी व्हाट आई डिड नो एयरपोर्ट रे आपण एयर कंडीशनिंग सिस्टम जे कि देखि देबे डक्ट सोरा जाई थाए ता भीतर इट इज अ नॉइजलेस सिस्टम ताकू से टेक्नोलॉजी को मु डिराइव करली आनो जोठी कि कंप्लीट एते बड़े एयरपोर्ट्स मॉल्स रे माने एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे जो ब्लोअर दरकार हुए ताको कैबिनेट सिस्टम किबा तबे एयर हैंडलिंग यूनिट कोंदी why not use that beauty in this drying system this is what is about it is a smart makeover of Azure LSU system AHU is I mean, air handling unit in place of DIDW blowers laminar over turbinate blowing system it is a non-heating method माने हमें ड्राइंग करिया को गले माने पैडी को जदी ड्राई करिया ड्राई इज अ बिग साइंस सो ता विषय मु डिटेल वर्णन करू नाही किंतु जदि आमे एयर टेम्परेचर को बढ़े दबा तार आरएच को आमे वेरी लो कर दबा तो रेट ऑफ ड्राइंग बढ़ी जाए किंतु एयर टेम्परेचर बढ़ेले धान भांगी जाए ब्रोकेन्स देयर विल लॉट ऑफ ब्रोकेन्स सो सेटा को माने माने रिड्यूस करया पे हेले हमकु नॉन हिटिंग मेथड रे केमती आमे सिस्टम को नहीं परिबा जोटा कि there are a lot of papers I studied and गोटे नॉन हिटिंग मेथड कि प्रेशर का हम बढ़े परिबा एक्चुअल प्रेशर को हम अचीव करिबा से दिन सर को नहीं कि हमें सो दिस इज हाउ ए कैबिनेट काइंड ऑफ अ सिस्टम्स वर डेवलप तापर आ गोटे कथा होची साइकोमेट्रिक अप्रोच रहला ताको मु नेक्स्ट स्लाइड रे कहबी ड्राइंग कर्व बेस ऑटोमेशन एति कि दिन से हमें लैम एयर रे इंक्लूड करली नॉट ओनली द प्रेशर बट आल्सो दिस थिंग्स तो कौन है कि आमे लैम एयर सिस्टम जिते आमे कलु तो नाउ इट इज अ नॉइजलेस लो प्रेशर ड्रॉप माने हाई स्टैटिक ड्रॉप माने इनलेट ड्रॉप बहुत कम हुए बिकॉज इफ यू सी देयर इज अ बेल माउथ कर्व एयर जेते जेते स्मूथली जीवो जेते स्मूथ कॉर्नर रे जीवो सेते प्रॉपर हैंडलिंग करियो तो गोटे इटालियन टेक्नोलॉजी को आमे अडॉप्ट कले जागरे तापर कैबिनेट आमे डेवलप कले हमर दिस इज व्हाट द कैबिनेट इज अबाउट this is what the blower is about जो दारा प्रोफाइल हमें अडॉप्ट कलु इटालियन टेक्नोलॉजी रो ताकू हमें यूज कलु और केते प्रेशर ड्रॉप हैला डक्टिंग रे
को केते केते प्रेशर कौन ड्रॉप होबो डक्टिंग रे ताकू आमे इवैल्यूएट कलु केंकि के तार डक्ट डिपेंड करे तार सीएफडी एनालिसिस करके केते केते प्रेशर ड्रॉप ला ईच एंड एवरी डक्ट रे आमे आउ रहिला ग्रेन रो डेप्थ केते अछि ड्रायर भीतर तार सेट कर्व हिसाब रे तार डेटा को आमे बाहर कलु तापर प्रैक्टिकली स्टडी कलु तापर हे सला पर केते देन वी हैव अराइव्ड एट कि ए ड्रायर रे एग्जैक्टली दिस इज अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप इज रिक्वायर्ड ताको हे सला पर द ब्लोअर वे डिसाइडेड सो दे से दिन से साल पर दिस इनोवेशन एचयू आमे ये कलु टिपिकली दीटा टाइप रो ड्रायर थाए गोटे होची ब्लोइंग माने पॉजिटिव ड्राफ्ट आ वो नेगेटिव ड्राफ्ट जो थी कि सक्शन टाइप ऑफ ड्रायर तो ये दीटा एठी लोक माने सेंट्रिफ्यूगल ब्लोअर यूज करूथिले whereas in suction type of dryer they couldn't use centrifugal blower का सेंट्रिफ्यूगल ब्लोअर दीपटे इनलेट से यूज करि पानथले तार कारण से माने लोक माने एबे भी कंपटीशन माने से माने यूज करथि एक्सियल ब्लोअर रो प्रॉब्लम होछि सिमिलर पावर रे यू नो इट गिव्स अ लेस स्टैटिक तो दे एंड अप इन नो दे तो जेमिति मु कहली कि स्टैटिक प्रेशर वाज आल्सो इंपोर्टेंट नॉट ओनली सीएमएच स्टैटिक प्रेशर तो आमे जो कैबिनेट सिस्टम कलु कैबिनेट रो सिस्टम रे बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव रे आमे यूज करि परलु लैम एयर सिस्टम को इट इज अ सेंट्रिफ्यूगल पर बट द सक्शन साइड को आमे ताको नहीं परलु so this is what both the beauty can be used in suction and also blowing type system there so dryer को करिया पे हेले there are a lot of things full mathematics रहिछि केते मॉइस्चर ड्रॉप हवार अछि साइकोमेट्रिक कंडीशंस कोन अछि हीट केते रिक्वायर हेछि वेपोराइज करिया पे ग्रेन केते हीट रे आसुछि डिटरमाइन द हीट रिक्वायर्ड इन द सिस्टम एयर वैल्यू केते अछि ताको सब नै कि गोटे एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर्स मु तयारी कली जहा को ईच एंड एवरी ड्रायर कारण हमर बहुत गुडे रेंजेस ऑफ ड्रायर अछि फ्रॉम 24 टन ड्रायर टू 100 मेट्रिक टन ड्रायर तो सब ड्रायर रे लैम सिस्टम को हमें एडॉप्ट कलु एंड दिस इज व्हाट कंप्लीटली रेजोनेशन हमें कलु हम ड्रायर रो तापर रहला साइकोमेट्रिक कंडीशंस जेमिति कि गोटे माने साइकोमेट्री मींस द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर रो स्टडी तार ब्यूटी को केमती आमे अडॉप्ट करिबा कारण आमे कोन करछु कोई हवा बाहरु नौछु ब्लोअर रे नौछु हीट एक्सचेंजर रे दे दोछु आमे कोन करछु पर्टिकुलर टाइमर बेस्ड रे आमे ताको एति कि समय मु 120 डिग्री दे सेंटीग्रेड रे करबी तापरे किछ समय मॉइस्चर अचीव हेसला परे ताकू मु फेर 90 को करबी तापरे स्लो ड्राइंग करबी एटा गोटे माने गोटे प्रैक्टिस रही गला बट हाउएवर आमे केमती साइकोमेट्रिक कंडीशंस को आमे नै कि आसी कि ताकू ये करबा से तार गोटे इनोवेशन आमे कलु जेंति कि माने इट विल जज दिस इज व्हाट द सिस्टम इज अबाउट से कोन करिवो कि दीटा गोटे हाइग्रोमीटर नबो आ गोटे टेम्परेचर नबो ड्राइबल टेम्परेचर देखिबो आ ह्यूमिडिटी टेम्परेचर देखिबो ए दीटा दिनस then it does तार स्मार्टनेस इट डज ए कंप्लीट एआई बेस्ड सिस्टम जे से कोन करिवो कैलकुलेट करिवो तार ह्यूमिडिटी रेस्पेक्ट टू ग्रेन को देखिबो आ ग्रेन रे एग्जैक्टली केते टेम्परेचर दरकार से समय रे राति रे गोटे प्रकार रो ह्यूमिडिटी रहउची दिन रे गोटे प्रकार रो ह्यूमिडिटी रहउची चारटा बेले गोटे गोटे प्रकार रो ह्यूमिडिटी रहउची एई सब फैक्टर को से जज करिबा और पीआईडी कंट्रोल को कंट्रोल करियो दिस इज अ स्मार्टनेस वी हैव गॉट इन दिस सिस्टम सो दिस इज व्हाट द ग्राफ इज अबाउट जोठी कि हमें देखु जे गोटे हमें थर्ड में एबे रिसेंटली हमें वी हैव डन इट थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सिक्स्थ में हमें ऑब्जर्व कलु जोठी के टेम्परेचर ट्रेंड केमती थिला इट इज अ रायपुर छत्तीसगढ़ रे गोटे जगह रे हमें तो ये करूथलु तापरे केमती तार ब्लू जोटा होची से टेम्परेचर ट्रेंड थ्रू आउट एटमॉस्फेयर रो तापरे जो ऑरेंज देखुछन जी होची रिलेटिव ह्यूमिडिटी तापरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिटरमाइन करिथिलु केते पानी अछि हवा रे that with respect to that now you change your heat exchanger heat with respect to that once we have done so this is how the body jo the dryer ta dekhun is a completely automated lam air system dryer which has been given now a bhitar rahla tar pura completely psychometric analysis saito ame cfd analysis karuthu tapare v4 ro लेफ्ट हैंड साइड जहाँ देखो तो इट्स अ मिक्स फ्लो डिप बट राइट हैंड साइड रे एबे जो माने नॉर्मली यूज ही आछि क्लासिकली तो क्लासिकली अल्टरनेट वी पोर्ट्स गुडी का अछि वी पोर्ट्स रे कोन हुए एक्चुअली
जोटा ब्लोइंग साइड आप देखुं जो हिट जाऊे गोटे पटे हॉट एयर एंटर कले आर पटटा ब्लाइंड थाए से ग्रेन भितर देकी ता ऊपर भिपोर्ट रे बाहरी जाए सेमती अल्टरनेट थी जोटा कि एग्जस्ट साइड रे थी एग्जस्ट साइड रे ओपन थी और पट साइड रे ब्लाइंड थी दिस इज हाउ ए ड्रायर वर्क्स तो ए जो अरेंजमेंट आपण देखुछे अल्टरनेट ओपन ब्लाइंड सिस्टम रे थिला तो ड्यू टू दैट आमे देखिले कि ना देयर नो मोर यूनिफॉर्मिटी इन डूइंग लोक माने जेंति प्रैक्टिस करथिले तापरे गोटे मिक्स फ्लो सिस्टम असला मिक्स फ्लो जे ए रिपोर्ट देखुचंती से ओपनिंग तार जेते सब ओपन साइड अछि सेटा बडो थिबो आ वंस इट गेट कंस्ट्रक्टेड टू द क्लोज साइड तो आ जो ना एयर एंट्री प्रॉपर हैला और मिक्सिंग हैला प्रॉपर मिक्सिंग हैला सो गोटे पटर ड्रायर रो आसी के आ गोटे पटर मिक्स है कि तार गोटे प्रॉपर ड्राइंग यूनिफॉर्म ड्राइंग सिस्टम को हमको मिलला जोटा कि आल्सो द फीचर ऑफ दिस लैम सिस्टम सो बाँ पटे डाहाणा पटे दीटा ड्रायर अपन देखछन गोटे होची सक्शन टाइप ऑफ ड्रायर जोटा कि छत्तीसगढ़ रे कंटीन्यूअस सिस्टम हमर लागिची जोठी कि अराउंड इट इज 12 टन पर आवर कंटीन्यूअस लाइन राइट हैंड साइड पटे ब्लोइंग टाइप ऑफ सिस्टम जोटा कि हमें ओडिसा रे देइछु हमें टेस्ट करिथिलु मोर ए इनोवेशन को पुरी रे डेलांग रे गोटे जगह रे हमें टेस्ट करिथिले एंड द कस्टमर इज क्वाइट हैप्पी अबाउट दिस इनोवेशन ताको तार good that no the innovation what I did no tested in Odisha so it's a great pride for me ଆଉ ତାପରେ and it is no we have so far sold around 100 LAM system माने हमें एक बार recent and it is quite creating crazy in the market लोक माने कहउछन जिंस कोन so this is what the innovation and new things it is because आउ रहिला प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन आमे कोन कले इंटेलिजेंस केमती आनले ये तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट ना जेमती इंटेलिजेंस ताको आमे कहूछु ड्रायर ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम जोठी कि आमे पैडी रो केते गुडे फीचर्स अछि कोन अछि पैडी रो मॉइस्चर कंटेंट अछि पावर बोलिंग प्रोसेस कोन हला तार क्रिटिकल मॉइस्चर कोन अछि फाइनल मॉइस्चर कोन अछि तार तार फीचर्स पैडी रो जो पर्टिकुलर पैडी रो फीचर्स रहि छी तापर मैकेनिकल फीचर्स केते गुडे अछि थर्मोडायनामिक फीचर्स अछि फ्लूइड डायनामिक फीचर्स अच्छी साइकोमेट्रिक फीचर्स अच्छी तो ये सब फीचर्स को नहीं कि माने जोटा आप रेड रेड देखो से मॉनिटरिंग फीचर इंटेलिजेंस सिस्टम की से दिन को मॉनिटर करिवो तापर जोटा ब्लू सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द डिजाइन जोटा कहली मैकेनिकल डिजाइन तापर रहला कंट्रोलिंग सिस्टम कंट्रोलिंग दैट वी ब्रिंग इंटेलिजेंस टू द सिस्टम दिस इज हाउ द ड्रायर इज अ स्मार्टर सिस्टम तो ये सब दिन को आम इंटीग्रेट करछे बिकॉज वी हैव ए वेरी गुड टीम ऑन पीएलसी प्रोग्रामिंग जो माने करूछंती दिस इज द लॉजिक मु दे साला पर दे हैव डन अ वंडरफुल सिस्टम दैट इज हाउ now we could say that we have a world class world standard dryers not only in India we have supplied in African nations and I have recently recently we are supplying certain LAM innovations to Suriname South America ଆଉ गियाना सुरिनाम मेक्सिको रे आमे हमर ए जिंसो टिक दउछु कोन अछि जिंस डिवाइस रे जोटा कि माने once we do certain mechanical system ताको इंटेलिजेंस दवा पे हेले किछि ज्ञानेंद्रिय किछि कर्मेंद्रिय दवा पे पड़े बेसिकली हमर जेंते आखि नाक कान सब ज्ञानेंद्रिय अछि वी सेंसरी ऑर्गन्स अछि सेमती माने आमे हाथ गोड़ सरसु कर्मेंद्रिय सेमती एग्जैक्टली गोटे सिस्टम को हमको करिया पे हेले तार मॉनिटरिंग सिस्टम्स सेंसर्स गुड़ा को दरकार हो जंती प्रॉक्सिमिटी सेंसर हला जोटा कि ओपनिंग गेट्स क्लोज ताको दरकार हुए स्टीम ना टेम्परेचर केते आपण रखुचंती केते टाइमिंग रखुचंती तापरे मॉइस्चर माइक्रोवेव बेस्ड सिस्टम गोटे एडवांस सिस्टम यूके रो सिस्टम आमे ताको अडॉप्ट करछु मॉइस्चर को डिटरमिन करिया पे सेटा को गोटे पीएलसी प्रोग्रामिंग सहित माने आमे प्रोग्रामिंग करछु देन दिस इज आर द कंट्रोलिंग डिवाइसेस व्हिच इज अ ऑटोमेशन जेंति मुको इनिशियली कहितली कि गोटे सिस्टम रे कोन होची कि हमर प्रॉब्लम्स होची कि ना ऑपरेटर बेस्ड जिंस ओडी को होतला ऑपरेटर थॉट प्रोसेस रे लोक माने करूथले बट नाउ विथ दिस सिस्टम नाउ इट इज कंप्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम्स
now with this system kon hochi ki you put the recipe, now the things happens with the controlling system तार जो intelligence background रहेला आमे ताको दौचे ताकू आमे टर्म कोचे इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन फुल प्लांट को आमे देखा गले कौन प्लांट रही छी गोटे होची ऑनलाइन प्री स्टीमिंग ना ऑटोमेशन सिस्टम रही छी जोटा कि एटा देखुचन जे आमे पैडी को प्री स्टीम करू तापर हॉट वाटर में केते एग्जैक्टली टेम्परेचर कलर मेंटेन करिया पहिले केते रखिया को दरकार ताको हॉट वाटर ऑटोमेशन द्वारा करा जाए पानी केते वेस्ट न हो केते रिसर्कुलेशन करि परिबा पानी को माने आमे कोन करू पानी जेते रिसर्कुलेट ला गोटे टॉप अप वाटर नो सो दैट ना तार स्टिपिंग स्पेल पळे जिवो किथि माने ताको डिकांट किछि खराब जोटा कि सेटल डाउन हो जाइथिबो ताको आमे बाहर कर दे फिर टॉप अप भलो वाटर ए द्वारा कोन होबो कि जेते बडे गोटे माने रिसर्कुलेशन होतला गोटे थरे पानी सोकिंग परे बाहर कर दिया जाउतला पैडी को ताकू आमे एटलीस्ट 3-4 थर कि 5 थर आमे यूज कर परबा डिपेंडिंग अपन द कस्टमर कि कस्टमर नाही मते 5 थर दरकार रिसर्कुलेशन वी कैन आल्सो डू दैट तार ऑटोमेशन करा गला कुकर ऑटोमेशन जोटा कि मु सीजीपीएस रे आपन को कहिली ड्रायर ऑटोमेशन जोटा कि ह्यूमिडिटी बेस्ड मॉइस्चर बेस्ड सिस्टम कर्व बेस्ड ऑटोमेशन ताको करा गला जोटा कि लोक माने टाइमिंग बेस्ड ऑटोमेशन करली ताको हमें अडॉप्ट करले तापर एमएचई लोडिंग अनलोडिंग ऑटोमेशन नाउ no this is literally no done जोठी कि गोटे लोक खाली कंट्रोल पैनल रे रहला आ गोटे लोक खाली देखा देखि ओनली 2 people can no 500 TPD प्लांट को कंप्लीटली रन करसन बिकॉज़ ऑफ दैट सो ये एटा होची इंटेलिजेंस सिस्टम जोटा कि इंडस्ट्री 4.0 एबे तो 5.0 को आसिलानी एबे इंडस्ट्री 4.0 जोटी कि इंटेलिजेंट सिस्टम हमें नेकी आसिलु दिस इज हाउ this is the control panel amaro ame deithau full plant sahita complete integration hei thai tar devices orako this is was certain screenshot joti ki am recipe then be cgps cooker recipe kete darkar temperature t1 t2 t3 at the temperature you have to set based on the requirement se automatically recall kari paribo पण रेसिपी दे देले ए सिस्टम सेमती ड्रायर रो केते टाइमिंग मॉइस्चर बेस्ड कर्व बेस्ड आपन को करिया पय अछि एति की मॉइस्चर आसले एति की पीआईडी कंट्रोल करिया पय पड़िबो तापर जेमती कहउतली ह्यूमिडिटी बेस्ड ऑटोमेशन रहला सेटा रो हमें कैप्चर करिछु this is how this no this is a plant where 20 ton which is huge around 500 480 TPD per day continuous parboiling is possible because of these innovations so this is how made this is how due to the grace of God and due to the help of people who believed on me and this is how we can make give assistance to the market thank you that's all from my side Yeah, thank you, Gyana. This was बहुत बढ़िया presentation movie ओडिया रे कहूची एटा गोटे भल हला ओडिया इंग्लिश मिसा प्रेजेंटेशन हला मोर गोटे क्वेश्चन मु आरंभ करिवि you know paddy paddy as far as I know government is selling to people at rice जोटा को हमर कोन 2 टंका केजी ना 10 टंका केजी ना कोन उडा हेनी की लोक नौजंदी आज ये what is the return on investment of this large size plant that you have created automation and everything what is the return on that investment सर आपण जानि के आश्चर्य होए कि एबे ओडिसा भलिया माने स्टेट रे जोटी कि आपण जेमति कंडीशंस कहले जोटी कि गवर्नमेंट बिक्री करूची 2 टंका चावल रे एक्चुअली कोन होची चासी माने कोन करछंती एबे धान बिक्री करछन से माने माने स्टोर करनाती कळगु नोनाती से माने गोटे बहुत भलो रेट रे माने मिनिमम प्राइस रे से माने बिक्री कर दोचंती एंड व्हाट टू whom they are selling to the millers and millers माने कोन करछंती कारण because now they are handling a huge amount of paddy जेतेबेले करूछंती प्रोसेस करूछंती आउ ड्यू टू ऑटोमेशन सांडलो माने ये रे जेतेबेले से माने पैडी प्रोसेस करी कि जेतेबेले गवर्नमेंट को दउछंती जेतिके रेट रे माने चासी निजे धान चावल करथला ताकू ये होतला तारो माने काफी कम रेट रे ए राइस मिलर सरा को
माने गवर्नमेंट को देई परछन कि गवर्नमेंट गोटे शेयर नौची माने से गवर्नमेंट मिलिंग रे नौची ड्यू टू दिस ड्यू टू ऑल दिस automation and ड्यू टू द टेक्नोलॉजी व्हाट इज अवेलेबल से तादरे एनर्जी कंजम्पशन भी कम करूची तापर भलो क्वालिटी भी पैडी दउची ताकू गवर्नमेंट किणी नउची कारण अच्छा बिकॉज सेटा गवर्नमेंट को दैट इज हाउ दिस गवर्नमेंट इज गिविंग हमको जणा अछि कि माने देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मिलर्स आमे जाको सेल करछु जोटा कि मु लास्ट को देखले देयर कैटेगरीज वर फ्री से जे माने मार्केट रे सेल करछन एक्सपोर्ट मार्केट को दउछंती देयर आर सेलर जोटा गवर्नमेंट मिलिंग पाई करूछंती गवर्नमेंट पाई से माने कोन करछंती माने दे गिव सब्सिडी टू द मिलर्स मिलर्स माने इंस्टॉल कले से माने गवर्नमेंट रो ही काम करिवे आउ से माने कोन चासी मानक ठरो गवर्नमेंट के जे पैडी प्रोडक्ट से माने चासी मानक ठरो प्रोक्योर कले तापर से माने मिलिंग करके गवर्नमेंट को दे दिले नाउ गवर्नमेंट दिस इज हाउ नाउ गवर्नमेंट इज नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल सप्लाई चेन हैपनिंग द सिस्टम जोटा कि गवर्नमेंट मिलिंग आउ ये मिलेगा गवर्नमेंट मिलिंग पाई सर वी हैव अ टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स गोटे कि पुराना कालिया जेमती सस्ता प्रोडक्ट्स भी रही जोटी कि ऑटोमेटेड प्लांट जोटा भी लोक माने यूज करिवे दैट इज आल्सो अवेलेबल और फुली ऑटोमेटेड जोटी लोक माने चाहुना कि लेबर इंटेंसिव हो आ सबुठ इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेटर माने क्वालिटी रे कंसिस्टेंसी रो आपण ऑटोमेशन आनले क्वालिटी रे कंसिस्टेंसी आसीओ आपन को एई प्रकार रो चावल रो कलर दरकार एति की दिनस दरकार से दिनसटा जो माने एक्सपोर्टर्स माने जो माने चाहंती तांकू पाई भलो गवर्नमेंट मिलिंग दे डोंट बॉदर अबाउट दैट सो तांकू गोटे नॉर्मल सिस्टम सो वी हैव अ कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स जागो हमें कैटर करता okay any other questions for him कल्पना की हाँ आप हाँ हाँ सर मु पूरा रेडी है कि बस एक्चुअली गोटे प्री रेडी है जा हाँ सही नहीं नहीं गोटे प्री मैरिज डिस्कशन रे थी मो से मो भईर झियो बाहागर रे से भितर बाहर के आसकी बर्तन ना लैपटॉप एक्सेस नथिला एबे अछि ज्ञान थैंक यू सो मच मु भाबुची जो माने भी जॉइन करिसेंती आजी से माने जानुचंती जे दिस इज आई थिंक अमंग ऑल द टीचर्स मेड सो फार दिस इज द वन व्हिच इज वेरी मच इनटू कोर सब्जेक्ट थैंक यू ମୁଁ ଜାଣିନି ଆ ଭିତରେ I had no idea that you have entered into this system now. अच्छा मोर किछि क्वेश्चन अछि एटा एलएसयू टाइप रो जो ड्रायर तमे जो कहू ऑटोमेशन आनिछ दिस इज जस्ट ए मॉडिफिकेशन ऑफ एलएसयू टाइप ऑफ ड्रायर व्हाट आई अंडरस्टैंड यस मैम आउ आपण को जानी कि माने आश्चर्य लागिवो देयर आर लॉट मेनी ड्रायर्स व्हिच आर अवेलेबल ना सटाके भी करूची जापानीज ड्रायर डेवलप समस्त फेल मार देछंती एलएसी ड्रायर इंडियन मार्केट रे ही चलुची पार्बोलिंग बिकॉज टिपिकली पार्बोलिंग जो सिस्टम अछि जो वी फोर्सेस को होइची से एलएसी ड्रायर रे हमर जो पार्बोलिंग मेथड ऑफ ड्राइंग पार्बोल ड्रायर जो 35 कार्बल पैडीटा जो बाहरुची पैडीटा कारण जनरली थ्रू आउट द ड्रायर जो इनोवेशन करिसंती बहुत गुडे ड्रायर्स अछि जोटा कि रॉ पैडी रे लोक माने भलो काम करे बट whereas LSU type of a system जोटा कि quite adapted to Indian kind of a system सेटा हेची तो आमे LSU को ड्रायर को बेस करके हम तादर ऑटोमेशन आनिचे हां LSU ड्रायर जोटा कि सेटा दैट इज व्हाट आई सेड दैट इज यस एक्चुअली आमे बेसिकली तमे जो सिस्टम टा आज कहला आमे दीटा यूनिट ऊपर फोकस करले दीटा यूनिट ऑपरेशन ऊपर गोटे पार्बोलिंग गोटे हमर ड्राइंग पार्बोइलिंग टा आमे सो फार आमे जेतकी जानि छे जेते कमर्शियल यूनिट अछि सब से सीएफटीआरआई मेथड टा को यूज करंती विथ दिस परफोरेटेड पाइप्स स्टीमिंग आमे छोटो स्केल रे भी करूचे बड़ स्केल रे भी करूचे सेही तमे गोटे बहुत यू हैव ब्रॉट इन ए ह्यूज चेंज मु कहया कथा सेही जोटा तमे जो सिस्टम टा करूछ तारा टेम्परेचर मेंटेन करिवा पई कि जहाँ भी कंटिन्यूअस सिस्टम कहूछ ना आमे तो सीएफटीआरआई सिस्टम टा बैच टाइप एटा रेसिडेंस टाइम केमती मेंटेन करछो जोटा तमे सो मेनी चैम्बर्स देखेइलो जस्ट वन चैम्बर टू अनदर जाई कि रेसिडेंस टाइम मेंटेन होछ ना केमती कोन मैम जेतेबेले कोन होची कि जेतेबेले तळे जो एयर लॉक्स रहिची से पूरा सिस्टम को पूरा मेंटेन करियो कि फुल नो सिस्टम रे पैडी रहिबो जेंती खाली जेंती होबन तळ एयर लॉक और प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऊपर रहितबा इट एंश्योर्स दैट द पैडी पूरा थ्रू आउट सिस्टम पैक हे किथिबो चालू थु तापरे आमे कोन डिसाइड करले कि जो ट्रैवल टाइम पैडी रो ऊपर तळु आसीवर 4 रु 5 मिनिट से ट्रैवल ये करबो अच्छा हां से 4 टू से रेसिडेंस टाइम टा एक्चुअली आई वाज इंटरेस्टेड इन यस दिस इज 4 रु 5 मिनिट से ट्रैवल करिवो अच्छा से प्रथम चैम्बर रे टिके किछि हिट पाइबो तापर रेस्ट होबो सेकंड चैम्बर रे टिके अधिका हिट पाइबो रेस्ट होबो
हॉट चैम्बर को आसला परे जिलेटिनेशन टेम्परेचर अचीव करिवो हम्म, सेठी ये हेसाला परे तापरे से वंस दैट टेम्परेचर से देखेला से तापरे सिस्टम रो बाहर के आसो नाउ दिस इज ए कंटीन्यूअस सिस्टम से जिंस को जो साइजिंग करा जाई छी से साइजिंग थ्रू रे सेटा अचीव हे छी अच्छा तापर पुणी कमिंग टू हमर ड्राइंग सिस्टम सेठी केमती तमे दैट इज आल्सो कंटीन्यूअस ताले सेठी कंटीन्यूअस ओनली ना तम मैडम लैम हमें सिस्टम एलएसयू सिस्टम टा जनरली जो एलएसयू सिस्टम दिस आर बैच सिस्टम से माने कोन करंती पैडी जत्ते पर्यंत सुखी नथिबा 12% मॉइस्चर पर्यंत रिसर्कुलेट करते से रिसर्कुलेट होतो गोटे ड्रायर भीतर से जे पसिकी रिसर्कुलेशन होतो आ जते रिसर्कुलेशन प्रथम सर्कुलेशन 120 डिग्री से प्रथम 4-5 सर्कुलेशन जोटा कि गोटे घंटा रे हिसाब रे हुए से 120 डिग्री सेंटीग्रेड रे से माने दे दियंती तापरे जेतेबेले माने से करकंती प्रथम 3-4 घंटा 120 3 घंटा से 120 डिग्री सेंटीग्रेड रे करिवे जोटा कि तार सरफेस मॉइस्चर को जोटा अनबाउंड मॉइस्चर को बाहर कर दिए तापर से माने डिसाइड कले कि बाउंड मॉइस्चर जेतेबेले अचीव करे माने से बाय प्रैक्टिस से कहले तापर टेम्परेचर कमे दियंती सेकंड सर्कुलेशन तापर 4-5 सर्कुलेशन में तापर फिफ्थ सर्कुलेशन को टेम्परेचर कमेबे 90 डिग्री सेंटीग्रेड रे एयर को देबे तापर लास्ट सर्कुलेशन को 80 डिग्री सेंटीग्रेड रे देबे दिस इज हाउ टोटल ड्राइंग टाइम कितने होची इन दैट मैडम ए टिपिकल ड्रायर जो माने टिपिकल ड्रायर जोटा हम देखली 8 घंटा रे ड्राई हुए पार्बल पर टिपिकली 8 घंटा रे ड्राई जो लैम सिस्टम में डेवलप कले सेटा को 7 घंटा रे ड्राई हला जोटा कि मु कहिनी सिस्टम रे 7 घंटा रे नॉन हीटिंग मेथड रे ड्राई हला घंटा टे सेव होला माने नो तार बैच टाइम तार रिडक्शन हे गला टाइम सेविंग इज ए मनी आपण भावंतु जदि दिन रे गोटे ड्रायर गोटे घंटा सेव कला दे 3-4टा ड्रायर अछि तार हिसाब कले आमे गोटे वर्ष रे से केते सेव करछि आ से एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करि परिबो तो आमे डिसाइड करछि जदि 20 के हमरे आमे गोटे आम ब्रांडिंग स्टेटमेंट 20 टन रे आपण 24 टन ड्रायर नौचन लैमर तो 24 लाख टका वर्ष को आपण सेव करिवे इफ इट इज 65 एटा टन ए जो सिस्टम टा हां दैट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को जीवा हमें मु कहया कथा एटा ए जो ड्रायर रो एटा कोन डिबेट ड्राइंग सिस्टम टा ना एटा तो तुम एलएसयू सिस्टम टा करछ ना एलएसी इट केन दिस इज एलएसी केन लेयर हां हां केन लेयर अच्छा थिन लेयर ड्राइंग आउ डीप बेड नुहे तापरे आमे कोन करले मिक्स फ्लो करले जेंति को वीबोर्ड मिक्स फ्लो हैला हां दैट आई अंडरस्टूड हां मिक्स फ्लो हैला सेति पे तमर यूनिफॉर्मिटी टिके बेटर मेंटेन होची नै कि यस तो मैम मझिरे यू टॉक्ड अबाउट दी जो लामिनार फ्लो को आनिबा पे टर्बुलेंस रो जनरली हमर कोन डीप डीप गुड़ाक रे आ एमती ए टाइप रो जिंस रे टर्बुलेंस एयर हुए जोटा तुम लामिनार को आनिचो एंड यू टॉक्ड अबाउट द डिह्यूमिडिफाइड एयर माने टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड देन नहीं मेक मैम मो डिह्यूमिडिफायर ऊपर सेटा गोटे आउ गोटे काम होची हमें डिह्यूमिडिफाइड एयर को दबा पाई सेटा से बहुत बड़ काम एते वॉल्यूम ऑफ एयर रे अपन डिह्यूमिडेशन करबा बहुत एनर्जी माने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट एनर्जी किंतु हमें करूछु माने मु तापर काम करूची किंतु एयर रे कोन हुए विभिन्न समय रे डे रे आपण देखंतु सखाळे हाई ह्यूमिडिटी थिबो आप खरा बेल को आसीबे तार ह्यूमिडिटी आमे मॉनिटर करू आमर एयर इटसेल्फ इज रिड्यूसिंग द ह्यूमिडिटी माने आमर नेचर इटसेल्फ ह्यूमिडिटी को बाहर कर दोची एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम किंतु एई दिनस को लोक माने टेम्पलेट हिसाब रे यूज करू नहंती से माने कोन करजंती हमको थंब रूल दरकार अछि 4 घंटा आमे पैडी पसला माने आमे 4टा सर्कुलेशन 120 डिग्री इरेस्पेक्टिव ऑफ की वर्षा हो कि दिन बेला हो कि राति बेला हो सो आमे कौन कलु मॉनिटर कलु नहीं आमे जो जोटा नेचर हमको दउची गोटे गोटे समय पॉइंट ऑफ टाइम रे हमको नेचर बहुत लो ह्यूमिडिटी ऑफर करूची व्हाई नॉट यूज दैट मु कौन करबी जेते बेले सेही समय रे जेते बेले ड्राइंग करली तो मु साइकोमेट्रिक्स रो गोटे पर्टिकुलर आरएच को मु टारगेट कली तो सी कौन करबी गोटे पर्टिकुलर आरएच पर्यंत ही हिट करबो से 1.5 आरएच मोर होची टारगेट जदि ह्यूमिडिटी कंडीशन एतिकी अछि मु साइकोमेट्रिक्स आपण जदि एक्जाक्टली सही मोर पॉइंट थिला पचरिबा मु भाबुची ए मु कहूची माने तुम आंसर मु हटे गेस ए जिंस ओडा सब ऑटोमेट हेची जोत पे तुम कहूचो जे हमें जो इंटरवेंशन ऑफ एआई आदर अछि ए यस यस फ्लक्चुएशन यस मैम यस एम्बिएंट एयर रो फ्लक्चुएशन टा ही माने हैज बीन ऑटोमेटेड या यस कहूची यस मैम यस मैम यस मैम अच्छा ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲ ତମେ ଯୋଉ ନନ୍ ହିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କହୁଛ ବଟ୍ ଦେନ୍ वी आर यूजिंग द टेम्परेचर हाई no I टेम्परेचर am what I told is that no heating आपण जदि ड्राइंग रेट बढ़िया को चाहिबे
हाँ हाँ व्हाट वी कैन डू आपण टेम्परेचर बढ़े देबे टेम्परेचर बढ़ेले सेंसिबली हीट हबो आरएच बहुत रिड्यूस कर दियो से फटाफट सुखी जिवो किंतु धान भांगी जिवो धान हाँ धान ब्रेकेज आसीबो जोटा बट जनरली नॉन हीटिंग मेथड जदी आमे देखिबा स्टैटिक प्रेशर वेयर जोटी स्टैटिक प्रेशर गोटे स्कोप थिला कि मु जदी प्रॉपर स्टैटिक प्रेशर देबी धानर जो डीप बेड सेट कर कि लोक माने कैलकुलेट करि नथिले मैडम ताकू जो माने करथिले जो ईच आपण देखंतु इंडस्ट्री जेते भी सिस्टम ना किए काहकू कॉपी करछि नले सिस्टम आसीछि समस्त यूज करछन से बडा बट द प्रिसाइज कैलकुलेशंस केते दरकार होछि आमे सिमुलेट कर हाँ हाँ सकते हमको जानना पड़ला नाही मते एतिक स्टैटिक दरकार अछि नाउ आई यूज दैट ब्यूटी अच्छा एतिक स्टैटिक दरकार अछि ताकू दियो सेतिक स्टैटिक बिकॉज ऑफ दैट एयर कोन हला ता भितरे जो थिन लेयर भितरे पसी कि इजीली मॉइस्चर को बाहर कर पालो आगुर कोन एई रिक्वायरमेंट गुडा भी तमरो ऑटोमेटेड हेछि कि यस जोटा मैम यस मैम यस मैम प्रेशर प्रोफाइल यस एंड मैम जो टेम्परेचर्स चेंजेस 120 90 देन लोअर टेम्परेचर जहाँ भी कंप्लीटली मैम मैम आमे मॉइस्चर बेस्ड तो कर्व बेस्ड सिस्टम रे आमे कोन करछु जो ऑटोमेशन रहला आमे ताको गोटे कर्व फिटिंग देखै दउ पैनल को एतिक एतिक ए पर्टिकुलर वेराइटी रन होची तार एटा होची मॉइस्चर कर्व रिडक्शन कर्व ड्राइंग कर्व तो आपण तो कोन करिवे से जेतले अचीव हला मॉइस्चर सेंस कला से अनुसार से कंट्रोल कला पीआईडी कंट्रोल बाहर को स्टीम देला से हीट करिया पे जेतले फॉलिंग रेट आसला से आस्ते आस्ते कमे देला तो इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस तो सेटा को दिस इज व्हाट द इंटेलिजेंस वी हैव ब्रॉट टू द सिस्टम एटा कर्व बेस्ड वेरी गुड वंडरफुल ज्ञान मु तो भावची दिस एक्चुअली आमे जानिनु एटा तुम जानथिबो एटा पाल सार उमा पाल सारकर एरिया एक्चुअली पार्बलिंग एंड यस फॉलोड बाय ड्राइंग बहुत यस जिंस से करिसेंती बट वी नेवर थॉट इन दिस डायरेक्शन हमर वी हैव आवर ओन कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस बट मु भाबुची और मेनी मोर क्वेश्चंस इन माय माइंड टू किंतु हमर टाइम नै मते देबो गाली देबे तेनु मु भाबुची गोटे रिक्वेस्ट एठी ही तुमको कॉमन फोरम रे करूची गोटे टाइम रे मु पिला मन को मैडम मु तुमको भुवनेश्वर रे कनेक्ट अछि करे एबे गोटे क्लास नबो तमे 1 आवर ऑन दिस मैडम हमरो मु भुवनेश्वर रे अछि एबे वर्तमान आज आछि इफ यू कैन रिक्वायर्ड मु कम एकना 30 तारिख जाके अछि यदि अच्छा आपण अच्छा कहबे मु गोटे किछ समय देई परिबी इफ यू very nice that will be मु immediately after this talk तुम संग କଥା हेबी यस then मैम बहुत it will be very very extremely useful to my students particularly post graduate students आमे टाइम फिक्स करबा मु फैकल्टी मान को ग्रुप रे देइथिली तमरो ए प्रोग्राम टा बट समस्त द होल टीम एक्चुअली इज इन इलेक्शन ड्यूटी सेति में केही जॉइन करि पालेनी मु अवश्य एक्सपेक्ट करनथली समथिंग दिस यूजफुलनेस रे आसीबो बट मु जानती समथिंग हमर प्रोसेसिंग कनेक्टेड आसीबो तमटू बट आई एम रियली थैंकफुल जी मुझे एक्चुअली गोटे बहुत पर्सनल फैमिली फंक्शन गोटे प्लानिंग रे बसथिली बट somehow मोर मन पड़ी गेला मु जॉइन कली थैंक यू देव भाई फॉर अरेंजिंग एंड inviting Gyana to this talk so that we could get to know this. I think we will again connect for much more. Thanks, Gyana. थैंक यू Actually, I have a suggestion. Why don't you create a mini scale, plant in your laboratory so that you can give a training to also the undergraduates. Why only graduate students? Graduate students can look into the मैडम psychrometric आमे chart. हेल्प करिवा सेति पई हाँ हाँ मु हाँ हमर सिस्टम आसे कि ना बिकॉज़ इट विल बी आल्सो ए पब्लिशिंग पर्स हाँ हाँ वी कैन हाँ आमे चाहूचु एक्चुअली मोर माने बहुत गुडे दिनस अछि कि मु मॉनिटर करिया को चाहूची कि केमती ड्राइंग होची ड्राइंग रे ईच पोर्ट रे तार केमती ग्राफ होची मु बाहर कर पीपल नो आई नीड स्टूडेंट्स आमे जाय कि बसी की करबा यदि चाहूची करिया पे देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट आर that इन will be माइंड even better. That will be even better. તમે આસો we will have a thorough discussion. Umapal sir will be very happy to meet you. We always discuss about you. मुझे जानने के लिए तुम्हें यही एरिया को स्विच ओवर कर चो. We thought of that storage. I was expecting something on storage. जोड़ा मो एरिया तुम्हें जान चो जेटा. मैडम मु स्टोरेज ऊपर भी एबे काम करूची आमे स्मूथ वॉल साइलोस आपण देखिबे करुगेटेड साइलोस मु हाँ स्मूथ हाँ वॉल साइलोस डिजाइन करिची जोटा कि आपण इंस्टेड ऑफ नो गिविंग स्टिफनेस जोटा कि ऑलरेडी आमे इंस्टॉल करि सलानी तो नो साइलो इज आल्सो ए बिग एरिया जोटा कि मोर एक्सपर्टीज प्रीवियस कंपनी रे थिला तो आई एम यूजिंग दैट डिजाइन थिंग जोटा कि मु एबे आमे स्मूथ वाला साइलो अप टू 750 मेट्रिक टन हपर बॉटम हाँ. आमे करके डिजाइन करूछु So that will be very useful. Actually, we'll discuss in details how we can use your expertise for the information and knowledge of our students and faculty. आमे कथा हवा. I think some J Dr. Pal also, JC Pal also has joined. College रे बहुत अल्प लोग join Oh, करछन. How right. Any how other देव भाई questions?
Any Yeah, other yeah. questions from others? Yeah, from others, not from Kalpana anymore. Not from Kalpana. Kalpana has taken a lot of time. No, but Okay, it's fine. That's good. That's No, good. Kalpana, it was really interesting, the interaction between you and Gyana. Gyana, more and I'm more I don't understand this paddy processing much, but more I caught one of your point was recirculation of water, and there is some constraint in that in doing that, right? Yes, yes, yes. That ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିପାରିଲି ଯେ typical smell ତା ଦେହରେ develop ହେଇଯାଉଛି, and then when you are recirculating that water, that smell keeps on developing. Is that correct? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Okay. ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ରାଇସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, those who are want to know ବହୁତ ମାନେ ବେସିକାଲି ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେମିତି ବାସମତି ହେଲା, ସେମାନେ ଥରେ ପାଣି ୟୁଜ କରିବେ, ତାପରେ ପାଣିକୁ ସେ soaking କରିସାରିଲା ପରେ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବେ. They will never use that. ତାକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବେ. ଏଇଟା Okay. ଗୋଟେ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲସ୍, ଆଉ ଆଗକୁ ମାନେ ରାଇସ୍ ମିଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହ୍ୟୁଜ ୱାଟର ଲସ୍, Yes. ହ୍ୟୁଜ ୱାଟର. ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପରେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି କେମିତି ପାଣି ଆମେ ସୋକିଂରେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା. ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସତୀଶ ବଲ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନୋଭେସନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ. କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, IIT ଖଡଗପୁର. This is what recirculation system, water recirculation, जोटा कि माछ माने चाषरे बेसी यूज है, aquaculture वाला लोक माने से माने करते हैं. They bought that beautiness to parboiling. से माने कौन कहले गोटे माने पानी जेतबे सोकिंग पर जोटा बाहरी आसे ताकू से माने गोटे टांकी को नेले, तापर से किसी समय तक स्टोर करले. स्टोर कर सला पर तारा जो जोटा कि पार्टिकुलर डस्ट सब अच्छी कि जहाँ बाहरला सेटा सेटल कर जाए किस समय सेटल कर सला पर से 20% तळ पटु से माने कोन करे ड्रेन कर देले ताको. नाउ इट इज सेटल, सेटा ड्रेन हेगला, तापर ऊपर जेतिकी ड्रेन करले सेतिकी ऊपर फिर ऐड करले, भलो Fresh water. रिसर्कुलेशन हला. नाउ ड्यू टू दैट अगेन से पानी रे जो थिला टर्बिडिटी ये थिला सेरा सब पळेला. नाउ दे कैन यूज दैट वाटर. तो किछि किछि लोक कोन कले नाइ मु 20% करिवि नाइ, मु 50%. ठीक अछि, आपण 50% पानी तो बंचे देले. तो I'm this is exactly same point को आसुतले माने have you considered filtration, deodorization of the circulation water? सर आमे करिछु माने एक्चुअली एटा होजे ह्यूज माने इकोनॉमी माने बहुत माने आरो मु आमे सजेस्ट कर व्हाई नॉट यूज रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस जोटी Yeah, reverse osmosis will इज अ be very ब्यूटीफुल costly, I प्रोसेस. ताकू suppose. आराम से हम तो करबा, किंतु तारे जो पैसा लागिवो हाँ. Expensive. मानको मागणा पानी मिलुछि And सर. and operating cost will be Cost very will high. be Now increased. people are not It's understanding difficult, sir. simple filtration, back filtration or something, filtration correctly, or is it like you have to go for is this solids dissolved solids, or is it suspended solids? There is Sir, suspended sir, solids as the ordinary if- filtration rahijibo. सर Both. बहुत अच्छी सर, बहुत Both. अच्छी. Okay. तो So बहुत then, समय कौन हुए सर तार प्रॉब्लम है एटा काहे की सक्सेस होनी, एई जो कांसेप्ट मेनी पीपल हैव टेकन तादरे माइक्रोब्स भी देव, कारण जो रूरल लेवल रे होची ना से माने इनिशियल स्टॉक टा ही एते क्लीन न थाए, तेनो माइक्रोब्स ही बहुत फास्ट वन डे रे कि फास्ट फ्यू आवर्स रे डेवलप हो जाए, सेटा को समहाउ हमें काढी पारने जोठो की सेटा there are ultraviolet sterilization lines and all that. So this is what Yeah. आमो सेही वाला चिंता करथिले, अल्ट्रा माने पास्चुरेशन काई हमें ताको व्हाई नॉट यूज अ पास्चुरेशन टेक्नोलॉजी इन दैट वाटर. बट हाउ You can, yes. एते सब जिंस गुडी को करिया कहले कारण लोकन को मागणा पानी मिलुछि सर. एबे nobody is bothered about That मु is- काई कि सीधा पानी नै कि आसेबी, दे विल नॉट इन्वेस्ट इन इट. हां जेतेबेले लोक मानको गवर्नमेंट नॉर्म्स आसीबो, यू कांट दैट मच वेस्ट वाटर, तारे किछि आसीबो रेगुलेशंस, पीपल विल थिंक अबाउट इट. इट इज अ बिग स्कोप ऑफ रिसर्च जोटा कि माने मो मुंडरे अछि कि नै. आई एम सर्चिंग पेपर्स एंड ऑल, and even also I ask Kalpana madam who are into academics, who are into research, so invest some time on it and let's come together with such a solution which is need of the hour, जोटा कि हमें पानी, जोटा कि पानी वेस्टेज हमें we can save. Actually, Gyana, टिके correct करिवे, there are government regulations. I don't know about rice mills. They strictly केही मानुनाथि monitor sir, होची ना नहीं, they because strictly not they- implementing. what I can understand, what I can understand, यार जो effluent बाहर हुआ, that must be very
yes sir Yeah, say government norms Effluent ପାଇଁ ପାଇଁ sir, effluent ପାଇଁ ଆମର norms ଟା ତ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। yeah. କିଛି ଜାଗାରେ sir ମାନୁଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ୟୁସେଜ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇନି, ଯୋଉଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ୟୁଜ ୟୁସେଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ୟୁଜ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପାଇଁ ତ ଅଲରେଡି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଛି। ସାର୍ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଣି ସେମାନେ ସିଏ Even for କରୁଛନ୍ତି surface waters there are restrictions now. ହୁଁ। But କେତେ ଦୂର implement ହଉଛି that's a different question. Now coming to my second question is second area of interest rather is your steam consumption. yes yes What ମାନେ your heating जो lamp air heating जो हଉଛି that is also by steam yes or sir is it yes sir electric? yes sir Steam. steam So steam ଦିଟା ଜାଗାରେ you are using steam and because it is coming in direct contact you have to have at least a very good quality steam. सर एक्चुअली आमे ड्रायर रे स्टीम टा होची इनडायरेक्टली हीट करा जाए से कोन करे जाए Dryer ट्यूब्स is को जाए fine when heater लगेगी କରୁଛ but आमे power boiling system रे पावर बोलिंग सिस्टम रे डायरेक्ट कांटेक्ट रे आसे yes it is a process that steam is required at a certain 2 kg pressure 2 to 3 kg 1 to 2 kg varies from different applications yeah so okay. एक kg सेतिकी आमे यूसेज हे जाए सेतिरे तापर तार जनरली सर तार condensate recovery process किछि have you thought of because again when you are into innovation so you can always think of saving money for the the operators. yes sir very true condensate रे आमे कोन करछु माने सोकिंग टाइम जोठी मु आपन को कहिली मोर सिस्टम रे इनबिल्ट सिस्टम अछि जोठरे वेपर लिक्विड जो कंडेंसेट टा बाहरची सेटा को आमे ड्रेन करे की कलेक्ट करनो छु गोटे पाइप रे कना Okay, जो आपण मोर सिस्टम I noticed that when I do that sectional view रे हाँ सेठी से कंडेंसेट बाहर करची सो से कंडेंसेट बट दैट इज वेरी मिनिस्कल सर एते परिमाण रे यूज होनी जोटा कि बेसी जोटा लॉसेस माने जोटा हुए सेटा ड्रायर रे हुए बेसी हीट कंजम्पशन जोटा हुए सेटा ड्रायर रे ही थाई right. कारण स्टीम बहुत नहीं से हीट last slide रे थिला ए साइड ए स्लाइड टा जोटी कंडेंसेट डोरा का रिमूव recovery होची हाँ नहीं dryer रे भी there will be a lot of steam requirement right. सर ड्रायर रा से ऑटोमेटिकली कंडेंसेट रिकवरी करया पे एसओपीटीएस गोटे सिस्टम अछि बकेट ट्रैप SOPTS अछि जोटी कि आपण so you are using that हम yeah सेटा yeah ही yeah जाने it is चाहते used हैं instead of that no it will be uneconomical solution sir right okay. it is being used Okay, Because any other questions or discussion? We are 8 minutes over, but we started 5 minutes late. So, well, we can continue in the forum, our CATN's forum or any forum. Yeah. And excellent, innovative. ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ନୂଆ ଶୁଣିଲି ସବୁ। CGPS ର full form କଣ? complete gelatinization by peripheral stemming central Okay. stemming ଓକେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜିଲାଟାଇଜେସନ ମାନେ ସେଟା କଣ ପେଜ ବାହାର କରିବ ନା କଣ? ना से सर का से कौन होगा सर क्रिस्टलाइन स्टार्च फॉर्म को जेल फॉर्म को नहीं जीवा बस सिंपल that is what parboiling is about ओके ତ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ହଁ madam she can describe more the ନା ସାର୍ ଯୋଉଟା chemistry ର ରାଇସ୍ ରେ ଯୋଉ ଆମର ମେନ୍ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଗୁଡା ଅଛି ନା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଚ କୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ ରୁ ଆମରଫସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସୋକ୍ କରୁଛେ ହିଟିଂ କରୁଛେ ତାପରେ ସେଟା ଆମରଫସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଂ ରେ ସେଟା ହାର୍ଡ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଶଲି ହାର୍ଭେଷ୍ଟେଡ ରାଇସ୍ ରେ କୁହନ୍ତି ଭାତ ପେଜୁଆ ହେଇଗଲା କି ମାନେ ପେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ସେଟା ଫ୍ଲେକି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଯେମିତି ଏଟା ଏକ୍ସେସ ହାର୍ଡ ହବନି ये जो कलर कहूला ज्ञान कलर जहाँ भी व्हाट एवर अदर जो स्मेल फेल होची सेतमे गोटे ऑप्टिमाइजेशन सबले दरकार पड़े ड्यूरिंग पारबॉइलिंग जेमति सेटा ऑफ क्वालिटी न हे जाऊ से ऑप्टिमाइजेशन सब स्टेट रे दे हैव देयर ओन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हैविंग पारबॉइलिंग सेटा को दे हैव गॉन फॉर ए वेरी गुड सिस्टम हमरो डेवलप हेची किछि किंतु प्राय हमें बैच रे ही वी हैव बीन सक्सेसफुल माने मु आम कथा कहूनी पूरा एंटायर लार्ज स्केल रे भी राइस मिलर माने ऑलरेडी अडॉप्ट करछनी गोटे सेफ्टी एरिया डेवलप करथिला किंतु दिस इज ए वेरी गुड वेरी मु भी सर आपन कोन मु भी तो फर्स्ट टाइम पे हमें
कोर लोक आमे भी सुनिलो एटा फर्स्ट टाइम पे से जिलेटिनाइजेशन को यूनिफॉर्मली माने इन टर्म्स ऑफ अमाउंट को करबा इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क तो से माने एआई यूज करके दे आर डूइंग आमे जानि परिबा एक्चुअली कमर्शियल होउची माने डेफिनेटली भलो होउची but that's Yes, a ma'am. very good thing. A lot of they are saving waste माने waste को save करछंती ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी मिनिमाइज करिया को ट्राई करछन इट्स वेरी गुड सिस्टम ए जिंस वाला जो बैच टाइप रे होतला बहुत ड्रॉजरी भी खाली क्वालिटी नहीं लॉट ऑफ ड्रॉजरी एट द फार्मर्स लेवल जोड़ा होतला दैट कैन आल्सो बी रिमूव ए जो सिस्टम टा होची एटा मतलब होची कोऑपरेटिव रे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज जोड़ा सब निया जाई परिबो डिफरेंट स्केल रो अवेलेबल बोली कहउछ ना ए सिस्टम गुडा Yes, ma'am. From a small scale to huge scale, it is available. मते तो लागुची वी कैन सी द स्कोप बट ए लॉन्ग वे जीवो बोली जदी ऑलरेडी पीपल आर एक्सेप्टिंग द क्वालिटी ताले तो बहुत भलो होबो जिंसटा Okay, thank you again. Thank you. And Thank you, it sir. was an excellent presentation, and वेरी wish एक्सीलेंट you all the best. Yeah, all Thank the you. best Thank for you. the future. With that, we'll just say goodbye for today.